Well, very good morning, or good afternoon, wherever we are in this tournament. Welcome to Game on Hay. Another couple of games today as the tournament slowly but surely moves towards the end of the Super 12 section of this World T20 in the UAE. There are still places up for grabs in the semi-finals. There are still mathematical possibilities for more than a couple of teams. One or two teams, of course, like Pakistan and England, remain very sure of their potential and where they're going to be in a week's time or so. But let's have a look and see who's playing today and what's at stake for them. So, first of all, we have Australia taking on Bangladesh in Dubai. That'll be on air live at 3 o'clock Pakistan time. The game that follows will be West Indies against Sri Lanka in Abu Dhabi, and that game will start live at 7 o'clock this evening. And in terms of the points, in terms of the tables, well, there are still mathematical possibilities, let's put it that way. One assumes, of course, or one knows that England are through to the semi-finals. South Africa, Australia, theoretically West Indies. This, again, all requires certain results to take place and certain points and certain net run rates. All have chances. But the likelihood, who knows? What do we reckon? Let's say hello and welcome to our panel again today. All the usual faces and all the usual places. That's nice to see. No one missing. Everyone present? Yes, absolutely. Yes, sir. Yes. Morning. Have you done your homework? Yes, sir. You've done your homework? Still doing. Still doing homework. Now, what's interesting, of course, we have at various stages through the last couple of weeks, 2.5 weeks, it's looked at the shirts that people have worn to see which sides they might be supporting on the day. Now, Sir Viv, normally when the West Indies are playing, is wearing maroon. But today, lovely, lovely crisp blue shirt, looks new. You're wearing socks, so you've got socks today that look... British blue, and you've got the West Indian maroon. It's all very confusing. There's lots of black, there's more blue over here, there's white, there's... I don't know, no one's supporting anyone anymore. OK, what do we think? This stage of the tournament, Sana, is where we start to clutch at straws if we're the sides that have had a poor start to the tournament. This is where they start to sort of build their hopes on not great foundations. There are houses of straw out there where they're thinking, OK, only if we get the right results, only if we get our net run rate, only if someone else loses do we have a chance. Otherwise, in a week's time, it's bye-bye and on a plane to distant shores. Yes, of course. I mean, the teams who have started well have now the luxury of enjoying their matches, just play for a win and that's it. But the teams who have not played really well at the start of the tournament will have to win with a lot of other complications. So they have more to think about, they have more to plan about, and it's a bit of extra pressure. But what's really good is that in both the groups, we still have 2 to 3 contenders for the semi-finals, and that keeps it very, very interesting, and that keeps everyone involved as well. So that's the plus point of it. But of course, if you have not started well, then you'll have to really work hard with the calculations and everything. Let me ask Viv. Viv, with a side like the West Indies, with a proud history, poor start to this tournament, and you've been faithfully supporting them throughout, well, until today, obviously, but you've been faithfully backing them. Oh, no, that's... I'm glad we saw those. That's major television. Did you get a look? Did you see the socks? And I'm glad it only went up to show the socks. Yeah, it's hidden support. Little. Well, okay, enough little supports. With West Indies at this stage now, and they know they've had a poor start to the tournament, they know they have this very, very slim chance of qualification. What is the psychology? I mean, who's going to change things around? Who do you need to support? Not support from without the team, but support from within the team, lead from within the team. Well, I guess Pollard, I think he's a magnificent leader, regardless of whatever order they may be in the position for this particular World Cup. In a sense, he's a magnificent leader. He's a driver of players, and I believe since they got off to a start in terms of winning, they'll be okay as the games go along. We all would say that they just need to keep on winning and hope that something happens on the other side. Teams do not always like that. They like to get their stuff done by themselves. But it's always pretty tricky when you haven't played that well and you have to depend on someone else's result in order for you to get through. What about, captains by definition are there to lead. They are given the responsibility, they're given the pips on the shoulder, they're there to
dictate what happens, but in every successful dressing room, there's someone, more than one actually, there's sort of 2 or 3 people in that room who you can look to and say, right, you're going to support me, you're going to, you know, there are sort of, I mean, the example I use for, say, as an England team, someone like Ben Stokes is a presence in that room. And just by having him there, you know, he's not captain, but he's, you know, in England he'll be supporting, say, Joe Root or Owen Morgan, depending on the form of the game. But you have those sort of people who you rely on to add substance to a team. So that's what I'm thinking about the West Indies. You know, Pollard can do so much as captain, but who's going to sort of be his wingman? Who's going to be the man in that dressing room? Because, all right, I suppose what I'm trying to get to is Chris Gale. You know, it was a huge presence in dressing rooms, but is lacking something here. He's running out of steam, or he seems, not going to say for sure, but seems to have run out of steam. You need someone like him to say, right, captain, we're going to support you, we're going to drive you through here. He may not be performing at present, but he's a huge influence in the dressing room. Andre Russell is a huge influence. Nicholas Perrin, who at his young stage, it's a potential leader in the future. So there's lots of individuals, you know, in the room who can help to pick the guys up. Not just basically with the talk and all that. Even if we look back to maybe a Chris Gale, we need some performances from him. And if he can, West Indies team can get a lift from his performance, that to me would be of great help moving forward. I mean, okay, for instance, if you look at, say, I mean, one of the other teams playing today, Australia, they have a captain on the field for sure, Finch, who's an impressive character and knows his stuff in this one-day game, both 50 over and 20 over. But you've got people like Warner, who you know what he is, what he gives you. You know, he's always talking, he's always supporting. You've got a sort of feeling there are others in that, on that field who are sort of backing him up all the time. Look, there's no comparison between Australian mindset and West Indian mindset. They have a team, they've been playing together for a long time. They have a system. They have a very strong system because you cannot miss their domestic cricket and go and play other leagues. So this is what a strong cricket boards. West Indian cricket is like a World 11, invitational players. When it's come to the World Cup, please, sir, can you come and join the team? It's not a team. It's a few brands sitting in the dressing room, and they're so proud of their own way of playing, their own individual game, and this is how you cannot make a team. I think moving forward, they need Mickey Arthur to visit No, I don't West Indies. No, it's a lighter way, in lighter note, because they need a player who actually wanted to play for West Indies, and they should have a pool of 20 players staying together, working together, and whenever the cricket board needs them, they should be there. Yeah. That's good. That's a reasonable call, but I do believe that the players themselves have a responsibility if they want to represent their country and represent their country as best as they can. They themselves have a serious responsibility. You don't have to look for coaches to get them to feel that this is what's missing. I just believe that players have a serious responsibility. Yeah, you're right. Every player, I mean, but if you're a good captain in the first place, you'll instill that sort of culture into your players anyway, and they will accept that responsibility. If it's missing, if for any reason, I'm not suggesting, would I dare, if for any reason it's missing, then someone has to come in and say, right, okay, here's a plan, and bring people together. Well, I believe after this particular tournament, they can have an assessment after this tournament, and if that's what's needed, I have no problem with that. Seriously, The only problem with that is you waved goodbye to the tournament before you decided to do something about it. No, well, if they were going to be successful, you won't do anything about it, would you? But seeing that where they're at now, and if they are basically out, well, then you look for the missing pieces that you think can help the team in the future. But I still believe there's a realistic chance. All right, okay. Never forget that. Always believe. Always believe. It's for others to disbelieve. Okay, let's go to the left wing, Sana. On the same principle, just an interesting comparison for me as a guest here. Pakistan against India, as it were. I mean, Pakistan, that team at the moment looks as though you've got a very good leader who is respected. He's young, relatively young in leadership terms, but you get the feeling that they are having a great time because that team is all pulling together.
and that lots of people are taking responsibility, stepping up when need be, supporting in the field. India, for instance, by comparison, their first win yesterday, the first couple of games looked as though there were 11 guys on a field with no link. Discuss. Yeah, we'll have definitely we'll discuss this and come to this point as well. Leadership, राशिद भाई बड़ी इम्पोर्टेंट रही है इस पूरे टूर्नामेंट में. हमने देखा है कि जो ऑन ग्राउंड कैप्टन, जो परफॉर्मिंग कैप्टन रहे हैं, उसके ऊपर हमने बड़ी डिस्कशंस भी की हैं. और अब जो नज़र आता जा रहा है कि जो चांसेस जिनके सेमीफाइनल में, वो वही टीम्स हैं जिनके कैप्टन्स भी कदरे बेहतर हैं और इंचार्ज भी हैं. वेस्ट इंडीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सबके पास अभी चांस है सेमीफाइनल में आने का. तो अगर हम पहले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच की बात करें तो ऑब्वियसली बांग्लादेश लास्ट मैच में तो इस तरह की टीम नहीं लगी कि लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आज के मैच में. देखिए, आपने लीडरशिप या कैप्टनसी की अगर बात करते हैं तो इसको हम रिलेट करेंगे क्रिकेट बोर्ड के साथ करेंगे. और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का होता है. बांग्लादेश क्राइसिस में है इस वक्त, जो नज़र आ रहा है. बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती कि वो बिल्कुल ही जो लास्ट मैच, प्रीवियस मैच जो खेला उसमें प्लेइंग 11 जो थी, आकिब ने जैसे डिस्क्राइब किया था, अगर ग्रीन पिच है और उस पर आपने स्पिनर खिला दिए, इसका मतलब है कि कप्तान के ऊपर भी प्रेशर है, मैनेजमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है. ये हमारे यहाँ होते हैं. एशिया में ज़्यादा है. हमारे नहीं, वेस्ट इंडीज भी सेम चीज़ भी है. तो इसको संभालना पड़ता है. कैप्टन, हमारे कैप्टन को हम लीडर भी बनाते हैं. लाइक हमारे यहाँ जो लीडर बने क्रिकेटर के, जैसे इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैप्टन के साथ एक लीडर रहे हैं. इसके साथ अगर इंडिया का मैं देखता हूँ, धोनी कैप्टन भी और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उसकी होती है. मैं भी विराट में वो चीज़ ना हो. तो बांग्लादेश में आते हैं, महमूदुल्लाह इन्फ्लुएंस सीनियर प्लेयर्स का जो अभी बाहर हैं उनका बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहे हैं. क्रिकेट बोर्ड जो अच्छे क्रिकेट बोर्ड प्रॉपर चल रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीकन भी कह सकते हैं कुछ, न्यूजीलैंड, इनकी अगर सिस्टम देखेंगे ना, बेहतर सिस्टम है. क्रिकेट बोर्ड से बहुत रिलेटेड है. हमारे अभी थोड़ा सा चेंज आया है. हमारा जो प्रीवियस, ये नहीं है कि इस बोर्ड की वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है. उसको वसीम खान या मानी साहब थे, उनकी ये चीज़ें चल रही हैं साथ में. ये नहीं है कि सिर्फ इनकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हुई है. ठीक है, थोड़ी चेंजेस होती है, लेकिन लड़के वही हैं. माइंडसेट चेंज किया है. सकलैन को क्रेडिट जाता है, मैथ्यू हेडन को क्रेडिट जाता है, रमीज राजा भाई को जाता है क्रेडिट. तो इस तरह से आपके जो बोर्ड स्ट्रांग होते चले जाते हैं तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है. अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, जो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगा इश्यूज़ को, तो फिर टीम के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब होती है. लाइक बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज़ को आप देख लें, सेम इश्यूज़ हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और अजहर भाई, अगर हम श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की तरफ भी नज़र डालें तो श्रीलंका में भी मिडिल ऑर्डर की एक प्रॉब्लम आ रही है, 11 खिलाने की एक प्रॉब्लम आ रही है. वेस्ट इंडीज़ के अपने कुछ इश्यूज़ हैं, पर श्रीलंका अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. वेस्ट इंडीज़ के पास अभी भी मैथमेटिकल चांस है कि, और आज का मैच अगर ये जीतते हैं तो फिर इनको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा. ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका को अपना मैच हारना होगा, बट रियलिस्टिक एक चांस है. तो आप क्या समझते हैं? पॉलार्ड है, पूरन ने एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म किया, कितनी आप पोटेंशियल देखते हैं इस टीम में कि ये वापस कम बैक कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं राशिद भाई के उस पर जाऊंगा जो राशिद भाई बात कर रहे थे कि मसला एक्चुअली है क्या. देखें, अगर आप देखें जो टॉप टीम्स हैं उसमें इंग्लैंड को देखें आप, ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, उसके बाद न्यूजीलैंड को देखें आप, इवन पाकिस्तान को देखें आप. इनके जो बात हुई ना कैप्टनसी की या लीडर की बात हुई, मोगन 2015 से उसके कप्तान हैं, तो वो ही इज़ इन चार्ज कि सिलेक्शन में उनका हाथ है. विलियमसन इज सेम, फिंच को देखें सेम. सरफराज से उस वक्त भी ये था कि जब आपकी टीम नंबर 1 थी तो ये लोगों के पास इख्तियारात थे कि ये अपनी टीम जो इनको चाहिए होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. बाकी अगर आप श्रीलंका को देखें, वेस्ट इंडीज़ को देखें, आप इसमें देखें कि हर दूसरे टूर पे, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे टूर पे कोई ना कोई कप्तान होता है. तो आप एक टीम में आपके 6-7 कप्तान, जैसे हम 90s के टाइम पे ऐसे था, तो हर बंदे को जब आप ये कह देते हैं ना ये कप्तान है, तो दूसरे कप्तान को अगर आपकी जगह नहीं भी बनती तो उसके दिमाग में खामखा ये चीज़ होती है कि यार ये मुझे नहीं खिला रहा तो क्या वजह. हालांकि उसकी अगर जगह ना भी बनती हो तो ये आपके माइंडसेट में एक चीज़ आ जाती है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करते हैं कि बोर्ड के स्ट्रॉन्ग होने की. तो कप्तान को जब आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग करेगा या उसके साथ लेके चलेगा, तब आपके जो है ना एक कोर बनता है किसी भी चीज़ का. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर देखें, इसी वजह से ये टीमें ऊपर हैं बनिस्बत दूसरी टीमों के.
जहाँ तक बात की आपने वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। देखिए इस टीम में इतना पोटेंशियल और टैलेंट है इन लीग क्रिकेट में, इस जस्ट के जैसे समटाइम होता है ना, हम बात करते हैं कि जी आपकी परफॉर्मेंस सारे अच्छे लग रहे होते हैं, जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, तो आपको होता है कि ये टीम फाइटिंग स्पिरिट है इनमें, ये अच्छा खेल रही है। जब हमने जैसे इंडिया को देखा हमें लगा कि यार इस टीम में तो वो बात ही नहीं है, लेकिन कल अब वो जीते हैं तो ऐसा लग रहा था कि यार वो एक टीम है और सारा कुछ है। तो जीत जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना छुपा देती है और अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करती है। हार जो है, जब आप हारते हो तो बुरी चीज़ें बाहर निकलती हैं। अगर आप इस टीम में देखें, जैसे बात हो रही थी क्रिस गेल की, तो यू नेवर नो कि क्रिस गेल आज आके जो क्रिस गेल वाली नहीं खेल दें, और इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। देखें आप निकलस पूरन जो है, आई थिंक वंडरफुल टैलेंट, मतलब क्वालिटी प्लेयर है, हैटमैन है, ठीक है, जेसन होल्डर का वापस आना, उठ के वापस आने से इनकी टीम में बड़ी एक जान आई है। जैसे सर बहुत उसको करते हैं वॉल्श जूनियर को, ही इज अ क्वालिटी स्पिनर, मतलब हमने देखा कि उसका चांस था, हमने एक मैच देखा तो अगले मैच में उन्होंने उसी को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद थॉमस है उनके पास एक्स्ट्रा पेस के साथ, जिस तरह रसल ने ओवर किया है वहाँ पे उसने मैच बताया, तो इनके पास ऑल द रिसोर्सेज हैं, इस जस्ट के क्लिक करना है, चीज़ों को क्लिक करना है, देन ये टीम जो है उनके अच्छा परफॉर्म कर सकती है। श्रीलंका की जैसे आपने बात की, जाहिर सी बात है थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो क्रिकेट अच्छी खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फास्ट बॉलिंग थी, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, वो उन्होंने एग्जीक्यूशन मिस की है। अगर हम ओवरऑल क्रिकेट देखें, मतलब श्रीलंकन फील्डिंग में भी बहुत अच्छे नज़र आए आपको, उनकी बैटिंग में भी आपको डिफरेंट प्लेयरों ने डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म किया, उनकी स्किल्स हमें बहुत अच्छी लगी, उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी। सिर्फ एक चीज़ उसमें यह है कि यहाँ पे एक तो इनका 5वां बॉलर, यहाँ पे इनको मसला था, और इनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने उस तरह की एग्जीक्यूशन नहीं की जिस तरह की एग्जीक्यूशन चाहिए थी। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस किए। उमर भाई, आप श्रीलंका के लिए कह रहे थे लास्ट टाइम, अविष्का फर्नांडो का आपने जिक्र किया, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अकीला का आपने जिक्र किया, उनको वापस लाना। आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आप ये 2 चेंजेस देखना चाहेंगे? क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो फिर भी हमने देखा है कि उस तरीके से स्मूथ नहीं उनकी बैटिंग हुई, और एक एक्सपीरियंस का, पार्टनरशिप का फ़र्क नज़र आया हमें पिछले श्रीलंका के मैच में। जी बिल्कुल, वही चीज़ हम ऑलरेडी सबने वो भी किया, ब्रीफली बता भी दिया, लेकिन वही अगर आप देखें श्रीलंका की टीम में टॉप ऑर्डर से एक आध लड़का वो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, निशांका, वो है नीचे से, फिर असलांका, ये दोनों ऐसे है कि वो कंसिस्टेंटली 1-2 मैच के बाद सारे परफॉर्म कर। ओवरऑल अगर अब श्रीलंका की आप देखें क्वालिफाइंग राउंड से तो बड़े अच्छी क्रिकेट के लिए, और लग रहा है कि इनकी जो दोबारा जो एक टीम बना रहे हैं, इनके फ्यूचर कमिंग में 1-2 साल में ये टीम और ऊपर आ सकती है। जिस तरह यंगस्टर है, उनमें यंगस्टर को इंडक्ट किया, लेके आए, और जिस तरह परफॉर्मेंस है, लेकिन बस उनकी थोड़ी सी ये कि वही जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो स्कोरिंग है वो उनको कन्वर्ट नहीं किया बड़े स्कोर में। अगर एक आध बैट्समैन ने ऊपर से रन्स किए, 70 आउट किए या 60 आउट किए, तो नीचे से जो एक पार्टनरशिप आपको चाहिए T20 में कि 40-45 रन्स, इस तरह की कंट्रीब्यूशन लाइक कंसिस्टेंटली नहीं हुई। एक आध मैच में हुए जो कि ये लोग मैच जीते, और इसी तरह इनके लाइक कम्बिनेशन, इनकी वो कम्बिनेशन नहीं बने। ऑल्दो इनमें टैलेंट है, यंगस्टर भी, फील्डिंग अगर आप इनकी देखें बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस है उनकी फील्डिंग में भी। स्पिनर आप अगर देखें, हसरांगा टॉप विकेट टेकर जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, पोटेंशियल है, लेकिन ये कि थोड़ा सा समटाइम आपको मोमेंटम की ज़रूरत होती है, वो मोमेंटम आई थिंक इनका उस तरह नहीं बना, और बॉलिंग में थोड़ा सा मिस कर रहे थे, जो 5th बॉलर का एक पार्ट था। तो आई थिंक ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो समटाइम आपको जीत और हार में बिल्कुल क्रिएट करती है। तो आई थिंक इन फ्यूचर इनके पास अभी जिस तरह मिकी ने उनके पे काम किया है, यंगस्टर को इंडक्ट किया टीम में, फ्यूचर में इंशाल्लाह इनकी ये है कि अपकमिंग ये अच्छी टीम बन सकती है। Thank you very much. I think I'm going to translate that within the break, so we can go for a break. That would be the best strategy. Okay, we've probably got long enough. Yeah, replay it during the break. Okay. Well, as Sana suggests, time for a break. We'll have lots more today, building up towards today's 2 matches in a moment or two. Game on Hay.